हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर द हिंदू एनालिसिस। और आज के पेपर में अगर आप देखो तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है। न्यूज़ में जैसे कि अगर आप देख सकते हो तो वी कैन सी दैट फ्रॉम द अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट से लेके नगोर्नो काराबाख का जो कॉन्फ्लिक्ट लास्ट टाइम यूपीएससी ने 2023 के एग्जाम में पूछा था, वहां से लेके अगर आप देखो तो द mantras which Suhasini Heather has quoted, which India used to achieve a great success at G20 summit. With this, we have also a news about the women reservation bill which was introduced in Lok Sabha yesterday. साथ ही कनाडा के साथ there are the relations with Canada are going through a turmoil because of the recent killing of a Sikh separatist leader Nijar, who is a leader of Khalistani movement in Canada. ठीक है. And central government has also announced new science awards for those who have excellence or who have achieved excellence in the science field. Moreover, we also have an in detail perspective about the Kaveri Water Management Authority and the dispute of the Kaveri River, along with the simultaneous polls or the simultaneous elections. But in this editorial, as we have discussed the simultaneous elections or simultaneous polls multiple times in our The Hindu Analysis, तो इसलिए आज हम क्या देखेंगे, we will see the perspective about the amendments ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो डू वी रिक्वायर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इफ वी डू रिक्वायर दिस अमेंडमेंट, हाउ टू गो थ्रू दैट अमेंडमेंट. We will also go through GS1 topic which pertains to the art and culture section about the Hoysala temples being declared as a World Heritage Site. So before beginning the discussion, I'll ask you and I'll suggest all of you to go through and to connect to us for your next UPSC batch, for your next UPSC foundation, as our new batches have started from today, that is 20th of the September. Registrations are already open. You can register and you can come and start your classes from tomorrow, as our UPSC batches are totally focused and totally oriented towards completion of syllabus and getting you a rank in the final list. Fine. So let's start the discussion. As has been our schedule that हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू से. तो सर पहले आज ये न्यूज़ क्यों है? ये न्यूज़ इसलिए है बिकॉज ये न्यूज़ आज के पेपर में आई है, एंड आज के पेपर में यू कैन सी दैट अजरबैजान हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन इन काराबाख रीजन to fight until the end, until the dispute comes to an end. So this Nagorno-Karabakh region, which lies between the Armenia and Azerbaijan. This region was asked in UPSC 2023, and this was asked in a very simple manner so that the student could easily eliminate the options. ठीक है. As this question asked that how many, ठीक है, इसमें पूछा गया था कि how many pairs are correctly matched. तो अगर आपको पता हो तो नगोर्नो काराबाख इज ए रीजन बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. सो 1 and 2 बोथ ऑफ दीज पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड. बचा आपका लास्ट में खरसान एंड जेफोरिजा. तो आपको ये दो, अगर आपने ये देखे होंगे, अगर आपको नहीं पता हो और अगर आप ध्यान से देखते हो न्यूज को, न्यूज एनालिसिस हिंदू को पढ़ते हो, तो आपको ये पता चलेगा दैट ये जो दो रीजन्स है ये बिलोंग करते हैं किस एरिया से? लोहांस्क, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson. They too were in news due to the Russia-Ukraine conflict in September 2022. इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था. So that is why, और North Kivu and Ituri are those districts or those regions of DRC or the Democratic Republic of Congo जहां से the conflict about the humanitarian crisis came to news, and उसी चीज की वजह से you can see that
इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते ही ये दो रीजन्स न्यूज में थे, एंड ऑल ऑफ द प्लेसेस व्हिच वर आस्क्ड इन यूपीएससी 2023 एग्जाम were the places from news. So that is why I have included this section here, and this news was at the starting only. So ऐसे ही आपको जितने भी रीजन न्यूज में आते हैं, चाहे वो अभी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने यूरोप के इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसमें भी जितनी भी हमारी रीजन्स हैं, हमारी प्लेसेस है जो न्यूज में रही है, उन सबको हमें अच्छे से कवर करना होगा. Now coming to the news about the Justin Trudeau alleged the involvement of India in killing of the Khalistani separatist leader known as Nijjar. ठीक है, who was this Nijjar? In June, this Khalistani Tiger Force chief, ठीक है, KTF का चीफ जिसका नाम था हरदीप सिंह निजार, he was accused about the Khalistani movement, and in such scenario his death in the recent times, or the killing of this leader, was alleged upon India, that his death, uh, what this article discusses about. इस आर्टिकल में अगर आप देखो तो निजार was a designated terrorist had close links with banned outfit 6 for justice. एक आउटफिट है जो काम कर रहा है किसके लिए? खालिस्तान मूवमेंट के लिए. Indian government has already designated Nijjar, Hardeep Singh Nijjar, as an individual terrorist under UAPA. अभी रिसेंटली जब ये एलिगेशन आया फ्रॉम कनाडा, तो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, हु वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, dismissed the claims, he dismissed the allegations and said that these allegations are just jeopardizing the diplomatic relations between India and Canada. Now, moving further, yes, the Canadian action was termed bold and justified by the outfit in India, and its presence is there in Canada also. And this too is a pro-Khalistani group. However, हमें यहाँ पे याद क्या रखना है? हमें दो तीन चीजें याद रखनी है. वन इज 6 फॉर जस्टिस, अनदर इज द KTF, ठीक है, खालिस्तान टाइगर फोर्स, है ना. और नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट नीड टू वेट फॉर एन एडिटोरियल अबाउट इंडिया कनाडा रिलेशंस, ठीक है, एंड हाउ दिस किलिंग हैज इम्पैक्टेड इन दिस मैनर, और कैसे इम्पैक्ट हुआ है इस किलिंग का हमारे रिलेशंस पे, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पे. ठीक है, तो इन दो चीजों को हमने याद रखा, दैट दिस किलिंग. एंड नाउ लेट्स मूव टू एडिटोरियल. दिस आर्टिकल, दिस न्यूज आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा. अब जो ये बिल लोकसभा में आया है, बिल आया था, इस बिल के चलते हमने कल ही डिस्कशन किया था, एंटायर डिस्कशन अबाउट वुमेन रिजर्वेशन. ठीक है, एंटायर डिस्कशन ऑन वुमेन रिजर्वेशन सिंस 1996 से लेके 2008 तक जितनी भी प्रोविजंस आज तक आए हैं, जितनी भी बिल्स आई है, हमने वो सब बिल्स देखी, कितनी बिल्स लैप्स हुई है. उसके बाद हमने ये भी देखा दैट नेबरिंग कंट्रीज और अदर कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, रवांडा और युगांडा, उनमें वुमेन का एम्पावरमेंट कितना है इन पॉलिटिकल टर्म्स. So, in the political empowerment, women are playing more role in these countries, which usually economically are backward than India. However, when we talk about women reservation and women empowerment in political terms, so India is lacking on that parameter. That is why we have introduced this bill known as Women what Reservation Bill. तो ये जो बिल है वुमेन रिजर्वेशन बिल, दिस विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, विच विल बी 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, which will be implemented after 2026 delimitation. जब डिलिमिटेशन हो जाएगा 2026 में, सेंसस का डेटा आ जाएगा उससे पहले, उसके बाद ही इस रिजर्वेशन के इस बिल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ इस बिल का इफेक्ट या रिजर्वेशन का इफेक्ट जो होगा वुमेन रिजर्वेशन का 33%, वो 2029 के इलेक्शन में होगा. इसके साथ साथ हमें और फैक्ट्स याद
ये रखने हैं कि इस बिल में प्रोविजंस हैं वुमेन फॉर एससी एसटी वुमेन के लिए, बट ओबीसी वुमेन के लिए प्रोविजंस नहीं है फॉर सेपरेट रिजर्वेशन। मोर देन दिस द लॉ विल बी इन फोर्स फॉर 15 मोर ईयर्स। ठीक है, 15 साल के लिए ये लॉ रहेगा इन फोर्स, विद रिजर्व सीट्स रोटेटिंग आफ्टर ईच डिलिमिटेशन। तो जितना भी डिलिमिटेशन कमीशन आता जाएगा 5 5 साल में, उतना सीट्स को रोटेट किया जाएगा। that is how this that is what we need to remember from the prelims perspective about this bill. रेस्ट मेंस का पूरा एनालिसिस हमने कल की वीडियो में कर लिया है, आप कल का वीडियो देख सकते हो। टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और कुछ दिन पहले हमने देखा था that Shanti Niketan of Rabindranath Tagore was declared as World Heritage Site, and Shanti Niketan is 41st. However, the Hoysala Temple, the 42nd World Heritage Site of India. So these Hoysala temples, where are they located? They are located in Belur, Helibid, and Somnathpur in Karnataka. So there is this Chennakeshwara temple which is located in Belur, Hoysaleshwara temple which is located in Helibid, and both of these temples are in Hassan district. ये चीज याद रखनी है that two of these temples are in Hassan district. They were on the tentative list since 2014. However, the recent most, that is the Keshava temple of Somnathpur, which is in the Mysuru district, was added to the tentative list in 2022. तीनों को अभी डेजिग्नेशन मिला है और तीनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, तीनों टेम्पल्स को। ये जो टेम्पल्स है, होयसालेश्वरा आर्किटेक्चर जो है या होयसाला आर्किटेक्चर जो है, ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, दिस इज नोन एज वेसारा स्टाइल। This is known as Vesara style, or you can also call it the hybrid style. And this is also hybrid or Vesara style. Why is this called as hybrid? Because it's a mixture of Nagara and Dravida temple architecture. This is a mixture of Nagara and Dravida temple architecture. This follows a stellate plan, that is a star shaped plan. और अगर आप देखो यहाँ पे इस टेम्पल का, तो yes, this is a star shaped plan which you can see clearly that these temples follow a star-shaped plan and they are built on an upraised platform. ये भी चीजें याद रखनी है। Temples are constructed using chlorite schist or soapstone. Why soapstone? For intricate carving. Soapstone पे इजी हो जाती है कार्विंग करना, तो इसीलिए इन टेम्पल्स के अंदर और बाहर इंट्रिकेट कार्विंग होती है। ठीक है, डेकोरेशन होता है, डेजिग्नेशन होता है। इसके साथ साथ देयर आर हॉरिजॉन्टल frieze and sculptures which are signed by the artists, and these are unique features of these temples. Post this, we also need to understand that Hoysala architecture की जो buildings है, they were developed, और Hoysala architecture was developed during 11th and 14th century AD, mostly located in the southern Karnataka. Hoysala temples are sometimes called as hybrid Vesara, and Hoysala temples contain multiple shrines. जैसे हमारे चालुक्यन आर्किटेक्चर में होते हैं मल्टीपल श्राइन्स, चांडला आर्किटेक्चर में होते हैं मल्टीपल श्राइन्स। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है दैट देयर आर मल्टीपल श्राइन्स इन होयसाला टेम्पल्स। Further, moving ahead, this uses soapstone and there is a star-like ground plan, and for profusion or the decorative profession or the profession of decoration and the carvings, they use soapstones. Some of the famous temples are Hoysaleshwara temple, Chandakeshwara temple and Keshava temple. World Heritage, क्या होता है वर्ल्ड हेरिटेज? एंड दिस इज नाउ enjoying a legal protection by an international convention called as UNESCO. ठीक है, इसके साथ साथ the world heritage sites are designated by UNESCO for having cultural, historical, scientific and other forms of significance. Done. So let's move to the editorial section, and इस editorial में सुहासिनी हैदर talks about the mantras India used for G20 summit. So this G20 summit became a success. और क्या मंत्रास हमने यूज किए हैं? सुहासिनी हैदर स्टार्ट्स विद द डेथ ऑफ मल्टीलेटरलिज्म. She highlights the perspectives in the post Cold War era.
She says that in the post-Cold War era, we saw US portraying and pushing for a unipolar world order with the ideas, while China focused on the bipolar world order. So Suhasini Heather here highlights that China, which focused on bipolar world order, challenging the US hegemony, while as the United States, focusing on the unipolar world order, gave two perspectives to the world, while as India and the like-minded nations with India focused on non-alignment was multi-alignment. What does this mean? That was multilateralism. And in the recent past, we have seen that there were discussions and there were particularly various arguments and discourses which were going around in the international dimension that this multilateralism is no more. Now, with this perspective, the last breaths of multilateralism got revived. As Suhasini Heather says that, जैसा हमने अभी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में देखा, तो multilateralism is still alive, and the death of multilateralism is largely an exaggerated statement. There is no such thing which is actually happening that multilateralism is dying. No, that is not the case. However, we can see the revival of multilateralism and the ideologies behind the multilateralism, like multipolarity and global south influence, and the middle way which India has been portraying always for bridging the gap between global south and north. So what Suhasini Heather here highlights that कि जो डेथ ऑफ मल्टीलेटरलिज्म बोला जाता था ये ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वापस हमने रिवाइवल देखा है अभी, और रिवाइवल इस चीज से देखा है कि जब हमने कल भी आपको समझाया है कि G20 का जब हमने कल डिस्कशन किया तो वी टॉक्ड अबाउट द G7 ग्रुप, then the G8 group and the larger G20 group, in which there are countries which are particularly, अगर आप यहाँ पे देखो तो Suhasini Heather talks about those countries which were non-aligned. This was the group of non-aligned ones, जिसमें इंडिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, Saudi Arabia, these nations come together and they were non-aligned on one thing, that is we should not sanction Russia. ठीक है. However, they all condemned the war which was going in Ukraine, but they were not in favor of sanctioning of Russia. So these nations are also there, and there is also a group of G7 nations which particularly are the West dominated nations, and there is a bloc which was East dominated. Along with this, there was also a Russia China consensus which was developing on one thing, that is the Russia and China favoring each other, and this could have led to something which would have broke away, and this New Delhi declaration would have been impossible goal to achieve. However, with the multilateral approach of India and with the efficient bargaining of our Sherpas and our diplomatic the bargaining power and the diplomatic tactics, we have achieved this thing, that multilateralism and the support of all the countries has been garnered. Even G7 members, European Union or US allies, in सब ने they made concessions to preserve the G20, and they all agreed to remove the direct references to Russia when it comes to Russia-Ukraine conflict. First thing. Second is about multipolarity. Multipolarity में yes, China's initiative like BRI initiative has brought both influence and concerns. That is कि चाइना का जितना बड़ा issue है about this BRI, it's now covering more than 90 countries. 90 countries have already acceded to it, है ना? Along with CPEC, it's now influencing entire world, not only France, not only the Europe, not only the South Asia, but the entire world is now affected by this, even the African Union. But still, this multipolar approach
है ना, the dominant global power United States versus the China. This approach or the trade war which has been going between the two was set aside, and India's approach to align with the multipolar world order was recognized. ठीक है, so this India at this G20 summit advocated for multipolar world order. Including this, the global south influence of India, represented by over 125 countries with the voice on global issues, India championed itself and portrayed and put forward the demand from the African Union nations and accepted the membership of African Union at the G20, making the G20 to be now G21. So these outcomes were achieved with consensus, and the unanimous adoption of this New Delhi Declaration was highlighted. Moving further to the next editorial about the Kaveri Water Management Authority, let's have a look about this river Kaveri. This Kaveri River is also known as Ponni River in Tamil Nadu, and it's a sacred river of southern India. Along with this, the Brahmagiri hills of Western Ghats is the origin of this river, and from this Brahmagiri hills, it traverses southeasterly direction and flows through the states of Karnataka, Tamil Nadu. It also flows through Kerala and Puducherry, and in Pondicherry, it falls into the Bay of Bengal. The left bank and right bank tributaries, चाहे वो कबिनी हो या भवानी हो, already UPSC पूछ चुका है. You need to remember both of these tributaries. Make a map of this Kaveri river, और उस मैप पे check for the wildlife sanctuaries, national parks, and religious places which are located on this river. Along with this, keep a track of its left bank and right bank tributaries. ठीक है. So what is the issue actually? Why was this editorial written? और आज के पेपर में ये एडिटोरियल क्यों आया है? What is the problem with this river water sharing of Kaveri water management and Kaveri river? तो कावेरी रिवर का जो शेयरिंग का फॉर्मूला है, in the normal year, Karnataka has to release 177,000 million cubic feet of water towards Tamil Nadu. However, the annual quota has to be around 123 in the monsoon months, जो कि कम हो जाना चाहिए, है ना. नाउ द इशू इज दैट कि इस साल जो साउथ वेस्ट मॉनसून आया था, उस मॉनसून में इट हैज कास्टेड अ शैडो ओवर द कैचमेंट एरिया ऑफ कावेरी रिवर. तो कावेरी रिवर में इस बार पानी कम आया, और पानी कम आया तो ये जो डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला है अबाउट द वाटर शेयरिंग ऑफ दीज टू स्टेट्स इज नाउ कॉजिंग प्रॉब्लम, बिकॉज एक स्टेट को कम पानी मिलता है और दूसरे स्टेट को ज्यादा पानी मिल जाता है. ठीक है, अगर हमें इस रिवर के डिस्प्यूट का बैकग्राउंड जानना है तो हमें जाना होगा वापस 19th सेंचुरी में. और 19th सेंचुरी में जब मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर का किंगडम था, उन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था 19th सेंचुरी में. तो पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था 1892 में, सेकंड वाज साइंड इन 1924 टू रेगुलेट द शेयरिंग ऑफ कावेरी वाटर. कावेरी वाटर के पानी को शेयर करने के लिए ये एग्रीमेंट बना था. इस एग्रीमेंट को बनाने के बाद 1974 में कर्नाटका स्टार्टेड डाइवर्टिंग द वाटर फ्रॉम कावेरी रिवर विदाउट तमिलनाडु's कंसेंट. इसी चीज पे तमिलनाडु वेंट टू दी सुप्रीम कोर्ट और शार्प एस्केलेशन, और एस्केलेशन के बाद आफ्टर द एस्केलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड दिस कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इन 1990. ये ट्रिब्यूनल बन गया. ट्रिब्यूनल बनने के बाद 17 साल के बाद इस ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट आया 2007 में. वर्डिक्ट आने के बाद इट गेव अ फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दीज नंबर्स. ठीक है, फॉर्मूला आने के बाद 2018 में अगेन द verdict of this tribunal was upheld by Supreme Court, and court also said that there should be a Kaveri Water Management Authority and Kaveri Water Management Scheme should be drafted by central government. और उसी के चलते हुए central government formed this CWMA and a regulation committee also. And this is the entire thing which you need to keep in mind while dealing with such questions, and this may be asked in UPSC prelims only. ठीक है, we do not need this type of data for mains. However, yes, this can be a background if a question specific to Kaveri river water, this can be your introduction only.
if a specific question about Kaveri water dispute was asked. However, that won't be asked. River water disputes पूछा जा सकता है, वहां पे आपको एक एग्जांपल आप लिख सकते हो about Kaveri river water dispute. ठीक है. Moving further, what is the current situation of this river, or what's the current situation of this dispute? So around in the last 30 years, four Karnataka के जो चार reservoirs थे, the average flow in the last 30 years has changed, and there has been a deficit when it comes to the flow from Karnataka to Tamil Nadu. So this deficit has caused problems, and now the Kaveri Water Management Authority has been deliberating on these issues and has directed Karnataka to ensure a realization of around 5,000 cubic feet per second for 15 days. And this formula also, this is actually the formula which we follow currently in this river water sharing. In the conclusion, you need to remember this thing, that ये जो distress sharing formula है, this must be agreed by both of the states. क्यों? क्योंकि दोनों states equally hamper हो रहे हैं water की scarcity से, और water की scarcity is a national issue, not only a national but it's a global issue, है ना. It's affected by all the factors, whether climate change, changing pattern, sea water, or rising sea levels, drying up of rivers, changing patterns of monsoon. So it's affected by all. So with the changes, the river water sharing should also evolve and change. Moving further to the explainer section. तो explainer section में एक editorial आया था आज, and this talked about simultaneous polls. However, simultaneous polls पे जैसा मैंने आपको बोला, तो पहले ही मैंने आपसे 2 से 4 ऐसे न्यूज एनालिसिस में मैंने ये डिस्कस कर लिया है. 4 हमने एनालिसिस की होगी, और 4 एनालिसिस में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट इज दिस, that how to deal with this simultaneous elections and what is the background of the simultaneous elections. So simultaneous polls, talking about the simultaneous polls, as you might be keeping this thing in mind कि हमारे जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको बनाया गया था चेयरमैन ऑफ अ कमिटी which was there to check the feasibility of simultaneous elections for state assemblies and Lok Sabha. This is an 8-member high-level committee to examine one nation, one election idea for India. ठीक है. This committee and this editorial talks about something which is more crucial than this one nation, one election. It says that this editorial talks about that अगर हमें ऐसा कुछ करना है, that is one nation, one election अगर हमें करना है, तो what we need is we need something which is more of a critical nature that was highlighted by law commission. लॉ कमीशन कहता है कि अगर हमें साइमल्टेनियस पोल्स करने हैं, तो what we need is we need a constitutional amendment. With constitutional amendment, we also need an amendment in People's Act of Representation of People's Act 1951. We also need an amendment of rules of procedure of Lok Sabha and state assemblies before such a poll is conducted. और हमें इन सब चीजों का अमेंडमेंट करना होगा, और ये अमेंडमेंट, this amendment must receive a ratification from at least 50% of the states. This must have a support of 50% of the states. This must be ratified. This amendment must be ratified by 50% of the states. Then only we can think of this thing called as one nation, one election. अब ये होने के साथ साथ why do we need and in what provisions do we need a ratification of the states? Any constitutional amendment like the 10th schedule or the 97th constitutional amendment needs the state's ratification. क्यों ratification चाहिए? क्यों state उन provisions को पास करे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं? ठीक है. जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के तरीके को चेंज करने के लिए, एंड द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, द प्रोविजंस रिगार्डिंग यूनियन जुडिशरी एंड हाई कोर्ट्स, administrative powers of union and states, any list, any change in the 7th schedule or the change in the lists which are mentioned in the 7th schedule. Also, representation of states in parliament, article 82 and article 368. Any provision which we want to change or which we want to amend needs a constitutional amendment. What? A constitutional amendment under article 368 clause 2. और क्यों चाहिए हमें ये amendment under 368 clause 2 with special majority plus ratification
by more than one half of states और स्टेट लेजिस्लेचर्स। क्यों चाहिए हमें ये स्पेशल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशन स्टेट्स का? क्योंकि इंडिया इज क्वाजी फेडरल इन नेचर, and this federal nature of Indian nation is a part of a basic structure as was highlighted by Supreme Court. And this basic structure or these federal provisions, if you want to change them, you need a constitutional amendment. And at this point the constitution becomes rigid. ठीक है, और इसीलिए इन प्रोविजंस को या इन चेंजेस को लाने के लिए, या ये जो चेंजेस हम लाएंगे या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम लाएंगे इन प्रोविजंस में, these were called as entrenched provisions, as Dr. B.R. Ambedkar was in favor of the ratification of these amendments by states. क्यों? Because these amendments may hamper the federal structure and the federal nature of the Indian state. अगर ये amendment, अगर ये provisions को change कर दिया, ठीक है, then the states and the security and unity and integrity of India may be compromised. ठीक है, at that point of time this federal nature may be compromised. और यही चीज हुई थी कब? क्योतो होलोहान केस में और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह केस। क्योतो होलोहान केस 1992 का था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को चैलेंज किया गया था। दिस एंटी डिफेक्शन लॉ वाज ब्रॉट इन बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस एंटी डिफेक्शन लॉ in the paragraph 9 was said that this anti defection law will be out of the judicial review. ठीक है, this will be out of the judicial review, and this part and this paragraph 9 was held as unconstitutional by Supreme Court. Similarly, in the India versus Rajendra N. Shah case of 2021, the 97th Constitutional Amendment Act, which was brought in for cooperative societies, was held as a part of it was held as unconstitutional or null and void. Why? Because the section or this cooperative societies subject is mentioned in entry number 32 in the state list of Schedule 7. ठीक है, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सेक्शन है इन द स्टेट लिस्ट, दिस एंड this section 52 or this anti-defection law was required to be passed and ratified by the states, and this was not ratified by the states. So these two provisions and part of these provisions was set aside by the court. There was a doctrine of eclipse which applied to these parts of the acts. जो भी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया या 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उन दोनों पे ये दोनों पार्ट्स जो हैं एंट्री नंबर 32 एंड दिस पैराग्राफ 9 वाज सेट असाइड। क्यों? क्योंकि स्टेट्स ने इसको पास नहीं किया था। देयरफॉर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर देयर वाज ओनली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स जिनको अप्रूव किया गया था। मूविंग फर्दर, to can we conclude on this thing or can we decipher out of this thing that अगर स्टेट रेटिफाई नहीं करता है किसी चीज को, अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट रेटिफाई नहीं करता है किसी चीज को, तो देन व्हाट विल बी द केस? विल दिस मीन दैट जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट कि ऑल द स्टेट्स एंड एनी स्टेट मस्ट नॉट और कैन नॉट रेस्किंड इट्स रेटिफिकेशन फॉर एन अमेंडमेंट, कोई भी स्टेट पीछे नहीं हट सकता है, कोई भी स्टेट किसी अमेंडमेंट को नकार नहीं सकता है। क्या इंडियन स्टेट्स भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या उस चीज से कोई फर्क पड़ेगा हमारे ओवरऑल अमेंडमेंट प्रोसेस पे या ओवरऑल अमेंडमेंट पे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वी नीड ओनली 1/2 ऑफ द स्टेट्स, है ना। वी नीड जस्ट अ मेजोरिटी, अ सिंपल मेजोरिटी से इनको पास करना पड़ेगा कोई भी एक्ट अगर ये पास करते हैं तो, और 1/2 लेजिस्लेचर्स शुड पास इट, है ना। तो अगर कोई स्टेट पीछे हटता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर देयर इज नो डेफिनेट आंसर टू इट, you need to remember that thing also. So that is why we need a constitutional amendment must with ratification of more than one half of the states if we are going for a simultaneous election. Moving further,
to the next news, and this news pertains to the science awards. अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है दैट एक नया सीरीज स्टार्ट किया है ऑफ साइंस अवार्ड्स, और ये साइंस अवार्ड्स किनको दिया जाएगा? ये उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने साइंस फील्ड में अच्छा कुछ अचीव किया होगा। क्या अचीव किया होगा? कुछ इनोवेट किया होगा। साइंटिस्ट होंगे, कुछ आइडिया दिया होगा, कुछ इन्वेंट किया होगा, कुछ डिस्कवर किया होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई होगी। अब इनको क्या दिया जाएगा? इनको दिया जाएगा अवार्ड। कौन सा अवार्ड? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। ये अवार्ड अनाउंस होगा 11th of the May every year, and this will be handed over by the President of India on August 23। ये अवार्ड के लिए सब लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इंडिया के सिटीजन्स हो। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द विज्ञान टीम अवार्ड। दैट्स इट। देयर विल बी अ कमेटी जो हर साल बनाई जाएगी और वही अवार्डीज को सिलेक्ट करेगी। 2 साल के लिए CSIR विल टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज अवार्ड्स। उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, डन विद दिस थिंग, एंड दैट्स इट। यू कैन रेफर टू दिस explanation further. Now, the news about in France and Germany talking about the enlargement proposal of European Union. European Union को enlarge क्यों करना है? ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर मल्टीपल कंट्रीज जिनको बोला जाता है कैंडिडेट कंट्रीज। क्या बोला जाता है? कैंडिडेट कंट्रीज। दीज कंट्रीज एस्पायर टू बी इंक्लूडेड इन द यूरोपियन यूनियन। इनको बोला, ये लोग अप्लाई कर रहे हैं इसलिए कि हमें भी यूरोपियन यूनियन में पार्ट दे दिया जाए, हमें भी यूरोपियन यूनियन में इंक्लूड किया जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये लोग चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना? बिकॉज इफ यू सी, यूरोप इज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल with the beginning of Russia first annexing the Crimea and then attacking the Ukraine. Now the ball has set and the clock has turned around, और अब जो चीजें हैं, now the European nations they are moving more towards unity in the Europe। ठीक है, the regional unity and regional connectivity, जिसमें आप देखो तो कुछ countries which are applying for NATO membership, कुछ countries which are applying for European Union membership, है ना, they are more tilting towards the west, है ना। तो now the point here is कि अगर यूरोपियन यूनियन में किसी कंट्री को अडाप्ट करना है या यूरोपियन यूनियन में रिफॉर्म्स लाने हैं, यूरोपियन यूनियन को एनलार्ज करना है, तो what are the criterias? The first criteria is Copenhagen criteria. What is this Copenhagen criteria about? This criteria was established in 1993 by Copenhagen European Council, and it was later strengthened in 1995 by the Madrid European Council. Copenhagen criteria also refers to the rules which were defined by European Council in 1993 in the Denmark. इसके साथ साथ, in order to become a member of European Union, 3 criterias must be there. कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहली चीज, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन में। किन इंस्टीट्यूशंस में? जो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज को इंश्योर करे, उन इंस्टीट्यूशंस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मार्केट इकोनॉमी फंक्शन करनी चाहिए वेल उस कंट्री की। फर्दर, देयर शुड बी एडहेरेंस टू द एम्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। ठीक है, ये 3 चीजें आर द बेसिक क्राइटेरियाज टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर मेंबरशिप। व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर मेंबरशिप? सबसे पहले वो कंट्री अग्री करे फॉर यूरोपियन यूनियन एसेशन। 3 डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज आर्टिकल 49 ऑफ 1992, दिस maastricht treaty, and second is 1993 declaration of European Council in Copenhagen. Third is the framework for negotiations with specific conditions for every candidate country. There is this framework of negotiations कि 2 countries, यूरोपियन यूनियन प्लस जो कंट्री उसको ज्वाइन करना चाहती है, कंट्री ए, उन दोनों के बीच में जो भी नेगोशिएशंस होंगी वो नेगोशिएशंस पे वो आ जाए। तो एक तो 2 ट्रीटी, वन इज maastricht ट्रीटी एंड सेकेंड इज द 1993 दिस declaration, that is this Copenhagen criteria. ठीक है, this Copenhagen criteria which was set in 1993. Post this, what is a candidate country? A candidate country कौन सी होती है? Candidate country
कौन होती है कैंडिडेट कंट्री? वो एक कंट्री है जो विच इज एस्पायरिंग फॉर टू बी अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है। देन व्हाट इज द न्यू प्रपोजल विच इज पास्ड बाय और विच इज प्रपोज्ड बाय फ्रांस एंड जर्मनी? फ्रांस एंड जर्मनी क्या बोल रहे हैं? फ्रांस एंड जर्मनी बोल रहे हैं कि अगर हमें यूरोपियन यूनियन को एनलार्ज करना ही है तो हम यूरोपियन यूनियन को डिवाइड करेंगे चार हिस्सों में या चार सर्कल्स में, ठीक है, या चार लेयर्स में। क्या करेंगे? सबसे पहले हम रखेंगे यूरोपियन यूनियन में यूरो जोन को और शेंगन एरिया को, जो इसका इनर कोर होगा, किसका? यूरोपियन यूनियन का। इसके बाद होगा यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ, है ना। तो दिस विल बी द यूरो जोन एंड शेंगन एरिया। उसके बाद आएगा यूरोपियन यूनियन एंड देन देयर विल बी एसोसिएट मेंबर्स एंड एट द लास्ट देयर विल बी द यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी which will be having all of these will be having a common ideology and a platform. योर यूरो यूनियन इज दैट एरिया जो एक ही करेंसी, एक ही कस्टम और एक ही कस्टम लॉ के अंदर आएगा। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन विच विल फंक्शन एज अ कॉमन इकोनॉमिक एंड सोशो पोलिटिकल रीजन। ठीक है। तो दिस विल बी दी दिस इज द प्रपोजल विच इज हाईलाइटेड बाय फ्रांस एंड जर्मनी, बट the problem here is this is just proposed and this is not yet notified or adhered। ठीक है, अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल एंडोर्समेंट नहीं हुआ है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। यस, वी नीड टू हैव अ बैकग्राउंड एंड एन व्यू पॉइंट ऑफ दिस थिंग दैट व्हाट इज गोइंग इन अराउंड यूरोपियन यूनियन, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज ऑलवेज इन न्यूज सिंस द ब्रेग्जिट। ठीक है। तो ब्रेग्जिट हो गया, अभी एग्जिट के बाद कुछ और कंट्रीज एंट्री करेंगे। ठीक है। नाउ एट द लास्ट इन द साइंस सेक्शन this article about nudges. What do you mean by a nudge? Or what is this green nudge? This article actually talked about कि हम nudge or how can we nudge behavior of individuals, है ना। बिहेवियरल चेंज कैसे लेके आए हम इंडिविजुअल्स के अंदर। चेंज क्यों लानी है? चेंज लानी है प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके, और प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके चेंज इसलिए लानी है क्योंकि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को है डिक्रीज करना, है ना। वी नीड टू डिक्रीज दिस प्लास्टिक पोल्यूशन। क्यों डिक्रीज करना है? बिकॉज इट टेक्स अराउंड 100 और मोर देन अ सेंचुरी टू degrade itself, and there is a lot of plastic which is going around, which is piling up, and it's not degrading on its own. As you can see this man collecting the bottles। अब मैंने ये एडिटोरियल क्यों उठाया और इस पिक्चर को मैं हाईलाइट क्यों करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये याद रहे ये पिक्चर, और आपको पिक्चर के साथ साथ ये कहानी याद रहे कि हम नज बिहेवियर को यूज कैसे कर सकते हैं टू ब्रिंग इन अ बिहेवियरल चेंज इन पीपल, सो दैट अगर आपको कल को ये चेंज लानी हो अपने डिस्ट्रिक्ट में आफ्टर बिकमिंग द डीएम, है ना, इफ यू वांट टू ब्रिंग दिस चेंज इन योर ओन डिस्ट्रिक्ट, इन योर ओन एरिया और इन योर ओन स्टेट और एट द नेशनल लेवल, यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज। और अगर यही चीज आपसे पूछा जाए कहाँ पे? एथिक्स के पेपर में, ऐसे के पेपर में, तो आप इसी चीज को याद करके एक एनेक्डोट लिख सकते हो, और यू कैन राइट अ केस स्टडी कि आप कैसे चेंज करोगे प्लास्टिक बिहेवियर को। और वो कैसे चेंज करोगे? जैसे आप देखो तो यहाँ पे देर इज दिस केस स्टडी ऑफ अलीबाबा। Alibaba's food delivery platform in China started with this thing called as default option as no cutlery, कि जब भी कोई खाना मंगाने वाला कोई खाना ऑर्डर करता है तो वो वहाँ पे ऐप पे एक डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट हुआ होता है कि मुझे कटलरी नहीं चाहिए, मुझे प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के फोक्स नहीं चाहिए, प्लास्टिक के नाइफ नहीं चाहिए। दिस ऑप्शन, इसको डिफॉल्ट ऑप्शन बनाने के बाद देयर वाज अ राइज ऑफ 680% ऑफ नो कटलरी ऑर्डर्स इन चाइना। सिमिलरली जोमेटो ने यही चीज इंडिया में की, और यहाँ पे भी लोगों ने उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। एंड दिस हैज रिजल्टेड टू 3 out of 5 ऑर्डर्स चूजिंग टू ऑप्ट आउट ऑफ रिसीविंग कटलरी। सब लोग ने क्या बोला कि हमें कटलरी नहीं चाहिए, विच हैज रिजल्टेड इन एन एस्टिमेट ऑफ 1000 मेट्रिक टन रिडक्शन इन कटलरी वेस्ट। ठीक है, जितना भी ये कटलरी वेस्ट होता है इसमें रिडक्शन आ गया, और रिडक्शन हुआ बहुत ज्यादा। कितना हुआ रिडक्शन? 1000 मेट्रिक टन का। सो दैट इज हाउ यू कैन ब्रिंग इन दी बिहेवियरल चेंज इन योर
सब्जेक्ट पीपल, बिहेवियरल चेंज कैसे लाई जा सकती है थ्रू नजिंग द बिहेवियर. So that is all for today's discussion. Yes, you can go through this question. This question was very simple and it was asked in UPSC 2022 GS paper 3rd. And this talks about how do vaccines work and what is the process and principle behind vaccine development. इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने कोविड 19 में वैक्सीन बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज की और कैसे बनाया. द फर्स्ट टू पार्ट्स आर स्टैटिक अबाउट साइंस. ये आपको तब पढ़ना था जब कोविड से हम जूझ रहे थे सब लोग, तो हमें ये पढ़ना चाहिए था 2021 के एंड में, 2022 में. उसके बाद दिस इज द करंट पार्ट, और ये हमें पढ़ना चाहिए था उस टाइम पे जब वैक्सीन बन रहे थे. ठीक है, तो द बेसिक एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन कि आप सिंपली वैक्सीन को डिफाइन करोगे कि वैक्सीन होती क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, और वैक्सीन इम्यून सिस्टम के साथ कैसे काम करती है, कैसे ये रेजिलियंस बनाती है, और कैसे हम उस एंटीजन को मारते हैं with the help of the antibodies which the vaccine which are administered to us through this vaccine. Now, what is the difference between Covaxin and Covishield and how were they made? For this thing and for the conclusion part, you can end up with the Make in India and Make for India. Now the thing is कि मैंने आपको यहाँ पे एक पूरा कंटेंट दे रखा है 2 स्लाइड्स पे, ताकि आप ये समझो कि वैक्सीन होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है. एंड देन going through this material at the end, going through these 2 slides, you will understand this thing कि आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या फोल्डर चाहिए था. आप इस क्वेश्चन को आंसर करो, इसका आंसर लिख के मुझे 9031036712 नंबर पे भेजो. व्हाट्सएप पे भेज के I'll check that answer. I'll suggest you and evaluate that answer personally, and I'll suggest you that how to improvise on that answer. ठीक है. So with this I wish you all the best. जय हिंद, जय भारत. Thank you.